Dear students, I would like to discuss with you some important properties of the correlation coefficient. As you know, the correlation coefficient rho is given by the covariance of x and y divided by the standard deviation of x and the standard deviation of y. तो पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये है कि this entity, this quantity can never be less than -1 or greater than +1. Yani, in simple words, rho, the correlation coefficient, always lies between -1 and +1. इसके बाद अब इस चीज को जरा डिटेल में देखते हैं कि ये जो चीज है इसका मतलब क्या है. बात असल में ये है कि x और y जो दो रैंडम वेरिएबल्स हैं जिनका आपस में रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप आप देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए द फर्स्ट थिंग यू वुड डू इज टू ड्रॉ द स्कैटर डायग्राम. स्कैटर डायग्राम में x को आप x एक्सिस पे ले लेंगे, जो वेरिएबल y है उसको y एक्सिस पे ले लेंगे और आपके पास डॉट्स आ जाएंगे टू रिप्रेजेंट द वेरियस ordered pairs that you have. Now, the point is this, that if the scatter diagram is going upward, जैसा कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, if it is in the upward direction, then rho lies between 0 and +1. और गौर से देखिए कि किस तरह इसको मैंने लिखा है. 0 less than rho less than or equal to 1. यानी ये नोट करें कि इक्वल साइन 1 से पहले जो है उसके साथ लगा हुआ है, लेकिन 0 के बाद जो लेस देन है उसके साथ अटैच नहीं किया हुआ. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, that if it is an upward going scatter diagram, then rho is a positive number. It is greater than 0 and it can at the most be equal to 1 but not bigger than 1. इसके बाद वो केस कंसिडर करें where your scatter diagram is, as you now see on the screen, it is neither upward nor going downward. आपको उसमें कोई डायरेक्शन अपवर्ड या डाउनवर्ड नजर नहीं आ रही. ऐसे केस में कि when it is absolutely non-directional, I should say, rho is equal to 0. This is the case when we say that there exists no linear correlation between x and y. Last but equally important, if your scatter diagram is going downward, as you now see on the screen, अगर आपकी x की वैल्यूज बढ़ती जाएं और y की वैल्यूज घटती जाएं, as x increases, y decreases, then obviously your scatter diagram will go downward. इस केस में the correlation coefficient rho is a negative number. And as you can see on the screen, we can write -1 less than or equal to rho less than 0. Again, note करें कि जो -1 के साथ लेस देन लिखा है मैंने, उसके साथ इक्वल साइन अटैच किया हुआ है, लेकिन जो 0 से पहले जो लेस देन लिखा है उसमें इक्वल साइन अटैच नहीं किया. अभी इससे फौरन पहले मैंने आपको वो केस बता दिया था ना, when rho can be exactly equal to 0. That is the case when it is neither an upward going nor a downward going scatter diagram. So ये जो अलग अलग situations हैं, 3 situations जो मैंने आपको बताई, upward going, no direction and downward going, इसके साथ जो जो कुछ है, हम जब इन्हें इकट्ठा करके बात करते हैं तो हम वो कहते हैं जो मैंने शुरू में कहा, that rho would always lie between -1 and +1. This, my dear students, is the very first and very important property of the correlation coefficient.